स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 7 साइंस क्वेश्चन पेपर फॉर हाफ ईयरली एग्जाम्स. So let's begin. MCQs. Question 1. Which organ in the human body secretes digestive juices? अब इसका करेक्ट आंसर है लिवर. एक्सप्लेन करता हूँ. हार्ट एंड ब्रेन ऑब्वियसली तो आएंगे नहीं. डाइजेस्टिव जूसेस को सेक्रेट करने वाले ऑर्गन्स, ऑब्वियस बात है. हार्ट तो हमारे ब्लड को हमारे अलग अलग बॉडी पार्ट्स में पंप करता है, और ब्रेन हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करती है. और किडनी भी नहीं होएगा, किडनी भी रॉन्ग आंसर होगा, क्योंकि किडनी का काम होता है एक्सक्रीशन करना. और ये ऑब्वियसली तो है नहीं ह्यूमन बॉडी में डाइजेस्टिव जूसेस को सेक्रेट करना. इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा लिवर, क्योंकि लिवर में है एक ऑर्गन तो बोल सकते हो जिसका नाम है गोल ब्लैडर. और गोल ब्लैडर के अंदर होता है बाइल, और जो ये बाइल होता है ये बहुत काम का होता है क्योंकि डाइजेशन के समय, क्योंकि गोल ब्लैडर का जो बाइल होता है वो प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करता है, जिसकी वजह से डाइजेशन ज़्यादा आसान होगा. और जो ये गोल ब्लैडर है ये किसका पार्ट है? लिवर का. और जो वो बाइल है वो क्या है? एक डाइजेस्टिव जूस. हेंस वाई हमारी लिवर एक ऑर्गन है जो ह्यूमन बॉडी में डाइजेस्टिव जूसेस को सेक्रेट करती है. चलो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन 2. The process of taking in food and breaking it down into simpler substances is called dash. The correct answer is digestion. ये भी pretty obvious है, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत explanation कर देता है. Excretion तो आएगा नहीं, क्योंकि excretion है the process of removing waste products from our body. एंड सर्कुलेशन भी नहीं आएगा, क्योंकि सर्कुलेशन है द प्रोसेस ऑफ ब्लड मूविंग टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. एंड फाइनली रेस्पिरेशन भी नहीं आएगा, क्योंकि रेस्पिरेशन हम ऑक्सीजन को टेक इन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल करते हैं, जिससे एनर्जी होती है. लेकिन ये सारे प्रोसेसेस ये वाला नहीं है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड एंड ब्रेकिंग इट डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस. इस वाले प्रोसेस का नाम है इनफैक्ट डाइजेशन. डाइजेशन है प्रोसेस जिससे हम खाने को लेते हैं और ब्रेक डाउन करते हैं उसको सिंपल सब्सटेंस में. नाउ अब करते हैं क्वेश्चन 3. विच टाइप ऑफ टीथ इन ह्यूमंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कटिंग एंड बाइटिंग फूड? इसका करेक्ट आंसर रहेगा इंसीजर्स. इंसीजर्स जो हमारे बीच के दांत होते हैं ना, फ्रंट वाले टीथ, ये होते हैं इंसीजर्स. ओके, नाउ लेट्स गो अहेड एंड डू क्वेश्चन 4. In which part of the digestive system does the absorption of nutrients primarily occur? Correct answer is small intestine. Let me explain. लार्ज इंटेस्टाइन का है, क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन का यूज़ होता है हमारे एक्सक्रीशन का या बॉडी से हार्मफुल प्रोडक्ट्स को निकालने का, वेस्ट प्रोडक्ट्स को निकालने का. और एसोफेगस तो हमारा जो खाना है जो हम खा चुके हैं उसको हमारे स्टमक में ट्रांसफ़र करने का. एंड स्टमक का तो मेन काम होता है डाइजेशन का. स्टमक डाइजेशन करता है, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन करता है अब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स. स्मॉल इंटेस्टाइन absorbs the nutrients through villi. Villi are essentially, as you have learned in this chapter, villi are essentially small, or I mean large finger-like projections. They increase the surface area of the small intestine and are connected with a rich supply of blood vessels. In supply of blood vessels से nutrients अलग अलग body parts में जाते हैं और ग्रोथ होती है, हमारे सेल्स की रिपेयर होता है और भी सारे सच फंक्शंस होते हैं.
Hence correct answer होगा small intestine. Okay, अब करते हैं question 5. What is the role of enzymes in digestion? The correct answer will be to break down food into simpler substances. Explain करते हैं इस आंसर को. To protect the stomach lining ये होगा क्योंकि वो है mucus का काम या mucosa. Mucus हमारी stomach lining को प्रोटेक्ट करता है ताकि वो डाइजेस्ट ना कर पाए अपने आप को, ताकि हमारी स्टमक लाइनिंग हमारे स्टमक के एसिड से ब्रेक अवे ना हो जाए. तो ये करेक्ट है. और टू ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स ही होगा क्योंकि टू ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स उसका काम है ब्लड वेसल्स का, उससे हमारी अलग अलग न्यूट्रिएंट्स जो है अलग अलग बॉडी पार्ट्स में जाते हैं. और टू प्रोवाइड एनर्जी टू दी बॉडी ये भी नहीं. करेक्ट आंसर है इसलिए टू ब्रेक डाउन फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस. ऑप्शन सी. ओके, अब करते हैं fill in the blanks questions. The process of breaking down complex food substance into simpler forms in the body, in the stomach is called, and correct answer digestion. Digestion breakdown करता है. डाइजेशन हमारे फूड को सिंपलर फॉर्म में करता है. इसकी वजह से जो अब्जॉर्प्शन है हमारे फूड का वो आसान हो जाता है. एंड इसकी वजह से हमें जो हमारे फूड के न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी मिल पाते हैं. ओके, क्वेश्चन 2. The finger-like projections in the small intestine that increases the surface area for absorption of nutrients are called villi. विली है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जिससे स्मॉल इंटेस्टाइन का अब सरफेस एरिया इंक्रीज होता है और वही अब्जॉर्प्शन करते हैं न्यूट्रिएंट्स का. विली. एंड क्वेश्चन 3 fill in the blanks. The enzyme that breaks down starch into sugar in our saliva is called dash. Correct answer amylase या amylase. ये ब्रेक डाउन करता है स्टार्च को शुगर में. हमारे सलाइवा में पाया जाता है एमिलेज. ये एक टाइप की एंजाइम होती है. फूड इज churned and mixed with gastric juices in the stomach. खाने में जो गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं अलग अलग टाइप के वो किस में पाए जाते हैं? स्टमक में. Stomach. And question 5. The undigested food is removed from the body through the large intestine. Large intestine जैसे हमने पहले बोला था, large intestine का काम होता है excretion में. Okay. Now let's do second MCQ. हीट इज अ फॉर्म ऑफ. हीट किस चीज का है फॉर्म? एनर्जी का. मैटर का तो है ही नहीं क्योंकि मैटर एक टाइप का ऑब्जेक्ट होता है, तुम बोल सकते हो, जो स्पेस को अकम्पनी करता है. और हीट ऑब्वियसली एक टाइप की मैटर तो है ही नहीं. ना ही हीट है लाइट, ना ही हीट है साउंड. हीट है एक टाइप की एनर्जी. ओके. विच ऑफ द फॉलोइंग. क्योंकि हम हीट को हीट एक टाइप की एनर्जी इसलिए क्योंकि ना ही हम हीट को सुन सकते हैं, ना ही हम हीट को देख सकते हैं, ना ही हीट एक चीज़ है जो स्पेस को अकम्पनी कर रही है, वो एक टाइप की एनर्जी है. ऑलराइट स्टूडेंट्स, चलो क्वेश्चन 2. Which of the following materials is a good insulator of heat? Correct answer plastic. Okay, let's go on and solve or do question 3. The transfer of heat through the movement of heated fluids is called convection.
insulation is a completely different concept. Insulation is when heat cannot be transferred through an object, or when an object is a poor conductor of heat, which is obviously not the case. And radiation is a different type of way for heat to transfer. It does not require any medium, whereas convection does. And conduction is to transfer heat from solid materials or solid substances / objects. However, it is asking the way to transfer heat through fluids or liquids, and the correct answer will be convection. Okay, now let's go and do question 4. What is the unit of measurement for heat energy? The correct answer will be joule. Kilogram will not be the correct answer because kilogram is used to measure weight, and obviously heat does not have any weight because it is not matter, it is instead a form of energy. And meter is used to, and meter is the unit of measurement for the length of something or the distance, which is when, since heat is an energy, it does not have any distance. And Kelvin is the unit to measure temperature. And an important thing to note is that it is asking heat energy, not temperature. So the correct answer will be joule. Joule. Okay, now let's go and do question 5. The process of heat transfer that does not require a medium is called radiation. Once again, insulation will not be the correct answer because it is a completely different concept. Insulation जब कोई substance या object heat को pass through ना करने दे, या जब कोई substance या object एक poor conductor of heat का, उसको बोलते हैं insulator. और ये पूछ रहा है process of heat transfer, तो ऑप्शन डी इंसुलेशन गलत है. और कन्वेक्शन एंड कंडक्शन गलत इसलिए है क्योंकि ये दोनों पूछ रहे हैं एक प्रोसेस ऑफ, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ रहा है द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर दैट डज नॉट रिक्वायर अ मीडियम, जबकि बोथ कंडक्शन और कन्वेक्शन रिक्वायर करता है एक मीडियम को, एंड रेडिएशन डज नॉट. इसलिए जो सन की हीट होती है वो अर्थ में पहुंच पाती है, क्योंकि जो स्पेस होता है वो कोई टाइप का मीडियम नहीं होता, वो एक वैक्यूम होता है. एंड इन वैक्यूम्स में कंडक्शन ना ही कन्वेक्शन से हीट ट्रांसफर हो सकती है, हाउएवर रेडिएशन से हो सकती है. हेंस व्हाई हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सन टू द अर्थ. ओके, नाउ लेट्स डू fill in the blanks questions. Question 1. The temperature at which a substance changes from a liquid to a solid is called its freezing point. It's called its freezing. Freezing point. अगर हम वाटर को लिए, वाटर को करा, वाटर ले लिए और फिर बाद में हमने उसको कूल करा, तो वाटर क्या था, वो था एक लिक्विड. लेकिन जब हमने उसको फ्रीज करा, कूल करा, तब वो क्या हो गया, सॉलिड. तो टेम्परेचर कौन सा था जिसमें वाटर एक सॉलिड में बनने लग गया या वाटर आइस में कन्वर्ट होने लग गया, उसी टेम्परेचर को बोलेंगे फ्रीजिंग पॉइंट. मिनिमम टेम्परेचर जिसमें से एक सब्सटेंस चेंज होता है लिक्विड से सॉलिड में, उसको बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट. ओके, नाउ लेट्स गो and do question 2. Metals are good conductors of heat because they have free electrons. Metals are good conductors of heat
free electrons. And now let's do question 3. The transfer of heat through direct contact of particles in a material is called conduction. कंडक्शन का प्रोसेस यूज होता है जब फ्लूइड्स, याद रखना फ्लूइड्स नॉट ओनली इंक्लूड्स लिक्विड्स बट ऑल्सो गैसेस. ओके, तो कन्वेक्शन का प्रोसेस फ्लूइड्स एंड गैसेस का हीट ट्रांसफर में काम का आता है. रेडिएशन काम का आता है जब कोई मीडियम है ही ना, और कंडक्शन काम होता है जब एक सॉलिड से ट्रांसफर करनी होगी हीट को. फॉर एग्जाम्पल एक स्पून ले लो. स्पून को अगर आपने एक जगह से हीट करा, एक पार्ट से बोल देते टिप से, तो फिर धीरे टाइम से वो स्पून पूरी तरह से हीट हो जाएगा, गर्म हो जाएगा. और ये डायरेक्ट कांटेक्ट होता है. जो सॉलिड होता है उसके हर एक पार्टिकल्स कांटेक्ट करते हैं, जबकि लिक्विड और गैस के नहीं करते हैं. उनके पार्टिकल्स क्या होता है, फ्री, स्प्रेड आउट. हाउएवर एक सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं कॉम्पैक्ट. इसकी वजह से जब भी कोई पार्टिकल होता है जिसमें हीट होती है, वह दूसरे पार्टिकल में कॉन्टैक्ट होगा और उसमें हीट ट्रांसफर होगी. तो ये चीज़ होती रहेगी जब तक पूरा ऑब्जेक्ट गर्म नहीं हो पाता, जब तक पूरा ऑब्जेक्ट गर्म नहीं होता. हेंस करेक्ट आंसर है इसका कंडक्शन. यस, conduction. Okay, now let's do question 4. The device used to measure temperature is called a thermometer. Thermometer से हम temperature को measure करते हैं. Heat travels from a hotter object to a cooler object due to the principle of heat flow. इसकी वजह से कंडक्शन का प्रोसेस होता है, क्योंकि जैसे मैंने पहले बोला जब एक हॉट पार्टिकल होता है वो एक दूसरे कोल्ड पार्टिकल के कांटेक्ट में आता है तो उसकी हीट ट्रांसफ़र हो जाती है, एंड इसकी वजह से वो चीज़ गर्म हो जाती है. और इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं, या प्रिंसिपल को बोलते हैं हीट फ्लो. ओके, नाउ लेट्स डू मोर MCQs. This time for acid, bases and salt. Which substance is considered an acid? Correct answer is lemon juice, because lemon juice contains citrus, and citrus is a type of acid, where baking soda, soap, milk, etc. these are not acids. Okay, now let's do question 2. When an acid reacts with a base, the products formed are salt and water. Option A. The reason why salt and water is the correct answer is because none of these are formed during a neutralization reaction. Only salt and water is formed, not salt and sugar, or water and gas, or sugar and salt. The only thing that is formed during a neutralization reaction, or when an acid reacts with a base, is salt and water. Okay, now let's do question 3. The pH scale ranges from 0 to 14. Or option C. Option C is correct. Okay, now let's do question 4. Which of the following substances is a common base found in many household cleaning products? The correct answer is ammonia. Many products that are used to clean our household, such as detergents, etc., all of them have ammonia present in them, and ammonia is a type of base. Lemon juice is obviously not the correct answer because it is an acid. Neither orange juice, it is also an acid because it contains citrus, and citrus is acidic in nature. And vinegar is also not the correct answer. The correct answer is ammonia.
Question 5. An antacid tablet is used to neutralize excess acid in the stomach. An antacid tablet is essentially a type of base, and as we all know, when an acid reacts with a base, a neutralization reaction occurs in which the acid neutralizes. Now, an antacid tablet neutralizes the acid. An example of an antacid is Eno. Okay, now let's do the fill in the blanks. Question 1. Acid turns blue litmus paper into red. Pretty self-explanatory. Bases turn red litmus paper into blue. When a base comes in contact with a strip of red litmus paper, it will turn the red litmus paper into blue colored litmus paper, and this indicates that a substance is a base. Similar situation with the above question. When an acid comes in contact with a blue strip of litmus paper, the strip of litmus paper will turn red, and this will indicate that the following substance is an acid. Okay, now let's do question 3. The reaction between an acid and a base to form water and salt is called neutralization. As we all know, as we have all seen in this video, that the neutralization reaction is when an acid and a base react with each other, and after this reaction occurs, what is obtained? Water and salt. So this whole reaction is known as the neutralization reaction. Okay, now let's do question 4. The substance that can be added to a solution to make it less acidic is called buffer. And the final question for today. Sodium hydroxide is an example of a strong base. Anyways, that is it for today, students. I hope you enjoyed the video, and make sure to support our channel by subscribing and hitting the bell icon. And you can also support this video by liking it, sharing it to your friends and family members, and by also commenting on it to ask any doubts and the likes. I hope you all enjoyed the video and keep learning. Bye bye.